Assalamu alaikum students. Today we will study the topic atomic size. Atomic size basically होता है the average distance between the nucleus of an atom and the outer electronic shell. For example, this is the nucleus of any atom and this is the first shell, second shell and third shell. So जो average distance nucleus और outermost shell का जो distance होगा, this is called as atomic size. Atomic size is the average distance between the nucleus of an atom and the outer electronic shell. So now we will study the trends of atomic radii in a period and within a group. तो अब हमने जब periodic table को study किया था तो मैंने आपको बताया था कि atomic size basically decrease होता है. It decreases as we move from left to right in a period, while atomic size जो होता है it increases as we move from top to bottom in a group. अब पहले हम ये देखते हैं कि atomic size decrease क्यों होता है जब हम left to right in a period जाते हैं. Because when we move from left to right in a period, atomic number increases. Number of protons in the nucleus increases. Protons positive charge on the nucleus increases by 1. Therefore जब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाता है तो हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस. यानी अगर जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन्स में ज़ाहिर है जब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा. पुल करने की वजह से एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को देखें तो हमारे पास होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. तो हम ये अगर हम यहाँ पे इनके एटॉमिक साइज़ देखें तो हमें पता चलेगा कि एटॉमिक साइज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होते जाते हैं एज़ वी मूव टुवर्ड्स द फ्लोरीन. उसकी वजह ये होती है कि इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6, 7, 8 एंड 9. तो अब आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है बाय 1 आहिस्ता आहिस्ता एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. This is the second period. These are the second period elements. So when we move from left to right, atomic number increases by 1. When the positive charge on the nucleus increases by 1, then they attract the electrons towards itself. When they attract the electrons towards itself, that's why the atomic size will decrease. So now we will see the trends of atomic radii in a group. When we move from top to bottom in a group, तो ग्रुप्स के अंदर क्या होता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह ये होती है कि नंबर ऑफ शेल्स दे आर गोइंग टू इंक्रीज. शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. So when the number of shells are going to increase, the atomic size will increases. For example, you can see these are the elements of group 1A. These are lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. So जब हम top to bottom आ रहे हैं तो हमें ये पता चलेगा कि एटॉमिक साइज़ आहिस्ता आहिस्ता यानी कि सोडियम का एटॉमिक साइज इससे बड़ा होगा, पोटेशियम का इससे बड़ा होगा एंड सो ऑन. So atomic size will increases as we move from top to bottom in a group due to the increase in the number of shells as well as due to increase in the shielding effect. So in your book you can see the figure 3.3 that is given in your book. You can see in this figure that atomic radii of different elements are shown. You can see that as we move from, this is the second period, as we move from left to right, atomic radius is going to decrease. Similarly, as we move from top to bottom, the atomic radius is going to increase. That's why this picture is atomic sizes of different elements. You can see very clearly in this figure. So according to this concept, example is given in your book. Example 3.6, identify the elements that has the greater atomic radius.
सो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में से आपने चूज़ करना है। तो अब आप देखें कि मैग्नीशियम हमारे पास ग्रुप 2 में है, ए में है, और एल्युमिनियम हमारे पास 3A में है। तो हम एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इज़ गोइंग टू डिक्रीज। तो हम इसमें लिखेंगे एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1, दैट्स वाई द एल्युमिनियम positive charge on the nucleus also increases. That's why aluminium has a smaller atomic size as compared to magnesium. Similarly कार्बन और सिलिकॉन का आपने बताना है। तो कार्बन और सिलिकॉन हमारे पास ये ग्रुप 4 में होते हैं। कार्बन ऊपर होता है, सिलिकॉन नीचे होता है। तो अब ज़ाहिर है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडाई इंक्रीज़ हो जाता है। टॉप टू बॉटम आने से एटॉमिक रेडियस जब इंक्रीज़ होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, तो आप ये बताएंगे सिलिकॉन का एटॉमिक साइज बढ़ा है एज कम्पेयर टू कार्बन। सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.6 in your notebooks.